पेशेंट 0 जिसके सिस्टम में वायरस का आखिरी म्यूटेशन जन्म लेगा, उसे रोकना पड़ेगा। ओके, और उसे कैसे रोकोगे तुम? मैं नहीं, आपको रोकना होगा। काम आप करेंगी डॉक्टर। व्हाट? आप तैयार हो डॉक्टर? Richa Chadha and Ali Fazal in the house. We'll be talking about their second season of Hindi audio thriller Virus 2062. We'll begin with their international achievements. Ali Fazal नजर आए कांधार में जेरार्ड बटलर के साथ, उधर रिचा चड्ढा अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रही हैं इंडो ब्रिट प्रोडक्शन आईना के साथ। ये इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। रिचा से पहला सवाल, थोड़ा सा घमंड सेट इन कर रहा है जब आप सुनती हैं ये सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आते हुए? Ghamand? नहीं, the opposite of Ghamand. Actually, it's a better question for Ali, considering he just has one big Hollywood film out. But नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हमें बिल्कुल भी घमंड है। फिलहाल अभी तो नहीं है। I think we'll stay grounded. Okay, Ali, Virus 2062 season 1 was great. Did you expect that kind of response for a podcast? No, not at all. Again, for us, this was the first of its kind. Yeah, I think, is that so? Yeah, it was one of the first ones that came in, and it worked. Now, Richa, एक लेमैन को लग सकता है कि इसमें आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, तो आप एक्टिंग नहीं कर रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि वॉइस एक्टिंग नॉर्मल एक्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट है या इजी? जैसे अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और कोई एक्टिंग कर रहा है, हम दोनों में रिलेटिवली एक्टर के लिए इजी है वॉइस एक्टिंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि इजी है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे काफी सारी रीटेक्स के लिए बुलाया गया मुझे, मतलब हाल फिलहाल हमने ये लास्ट ईयर डब किया था, बट उसके बाद जब एडिट हो गया तो मुझे रीटेक्स के लिए बुलाया। मतलब ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए मुझे बुलाया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि आप द अदर थिंग्स यू कांट रिलाई ऑन योर बॉडी, हाव भाव, हाथ के जेस्चर्स, कॉमिक टाइमिंग, आईज, वो सब नहीं है, बट लिटरली वॉइस को पूरी तरह से जूस करके काम करना है, और ये स्टोरी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay, Ali, what kind of prep does an actor do for a podcast like this? We actually went back with Mantra, who was also producing this and helping us, record this wonderful podcast. And we went over season 1. And I think that was the best way to sort of approach it in terms of prep, because we had done the prep of it last time and been blown away by the world and the sort of rabbit hole that this entire universe creates for the I was going to say viewers, listeners. Now I must say आप दोनों का Instagram content कमाल है. I mean, we live for it. I'm surprised. Don't live for it. में आता है कि और रील बनाओ, और डालो. We also hear the same stuff. रिसेंटली आप दोनों ने फुकरे फिल्म की 10 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उसी फिल्म के दौरान आप दोनों का प्यार भी शुरू हुआ, आप दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हुई। क्या लर्निंग है आपकी, या फिर अगर कोई मैसेज हो आपके पास फॉर यंग कपल्स, या व्हाट वुड बी योर लर्निंग? आई थिंक you just have to like the person that you're going to marry or be with. You have to get along. वो ज़्यादा जरूरी है। That you become friendship. प्यार दोस्ती है। क्लासिक प्यार दोस्ती है, true. Now you guys run Pushing Button Studio together. Underbug is the latest film that you two have produced. How different is it to be a producer? Yeah, that's the first time somebody's mentioned Underbug. It's a very under film और निकली है, वो अपना जर्नी नाप रही है. But our first production actually is a film called Girls Will Be Girls, which is a different production. Richa, of course, we led it from day one with a very close friend of hers, Shuchi Talati. Richa, you wanna, tell more about it? नहीं, तुम बताओ, और हिंदी में भी बोलो। तो हाँ, एक मदर डॉटर की कहानी है, 90s में सेट है. We've had a lot of fun making it. Of course, teething problems as all new producers have. We are baby steps into making our first film. Now Ali, you are in Kandhar with Gerard Butler. ये बात खुशी वाली ज्यादा लगती है या जिम्मेदारी वाली? नहीं यार, ये खुशी होती है पहले, उसके बाद I'm sure, I mean, it's a moment of pride. आप इंडिया से बहुत कम एक्सपोर्ट्स हुए हैं,
एंड आई एम ग्लैड दैट हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं, बट आई थिंक द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉलर. ये एक मेरी तमन्ना ये है कि ये एक नॉर्मल सी बन जाए, कि कल वो हवा निकल जाए, यू नो, वेस्टर्न फिल्मों में काम करने का, बिकॉज इट्स नॉट वेस्ट एनीमोर, इट्स गोइंग टू बी वर्ल्ड सिनेमा. Right. और हम उसका हिस्सा हैं, और हम उस पे मतलब राज कर चुके हैं. हमारा गोल्डन एरा आ चुका है पहले. आई जस्ट फील वी हैव टू क्लेम इट बैक, दैट्स ऑल. बहुत लोग कहते हैं तुम भाई वहां शिफ्ट हो जाओ, फिर ये होता है कि यार घर में भी रहना है, यहाँ बहुत अच्छी कहानियां हैं, मुझे सुनानी है. मिर्जापुर भी करना है. हाँ यार, वो गढ़ों से ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते ना. वो 10 दिन में खाना याद आ जाता है मुझे तो, मतलब ये चीजें तो और भी बड़ी हैं. सो आई फील जी. वो एक मैनेजमेंट है जो शायद मैं उससे जूझ रहा हूँ, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन होपफुली विल फाइंड अ वे फॉरवर्ड. Now in the end, let's play who's most likely to. मेरे पास कुछ सवाल है, आपको बताना होगा आप दोनों में से कौन उस सिचुएशन के लिए ज्यादा सुटेबल है. Most likely to be watching thriller shows out of you two. Me. Both. ये क्या बात है? You watch something with me and you're like, oh, it's so nice, you like this stuff. Yeah, like Bad Sisters, you were watching. I remember that was probably one of the best shows I ended up watching. That's Nice, okay. nice Yeah, slide cover up, nice. I mean, I thought it was just me and you and not both. So that's why the answers are like. Okay, who's most likely to use Bollywood references in everyday conversations? Me. Who's most likely to bring back their character home? Two actors living together, it would be hell. I mean, no, currently when I'm playing something, sometimes I'm sure maybe behavioral changes happen in that time period, but we don't bring anything कि टेबल पे ऐसे Right. you know डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में. That's the last thing. Yeah. हमारे सारे जो कैरेक्टर्स हम प्ले कर चुके हैं और जो प्ले कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक बेंच रखी है बाहर. हाँ. वो बाहर रहते हैं, बैठते हैं, बाहर wait बैठ करते हैं. जाते हैं and we just bring home the bread. Who's most likely to avoid family gatherings post shadi? None. None. Love it. Who out of you two is most likely to be politically correct? Ali. 100%. He's proper. Who's most likely to read all critic reviews? Both, I think. Yeah. Me not. Who's most likely to respond to a troll? And I think I know the answer. It used to be me, but now I couldn't bother about Bablu from Bhagalpur. Who's most likely to over prepare for a scene? I don't know, Ali. Is that your process? I don't know. Sometimes I over prepare because of my nature of knowing, wanting to know all exits in a room. But that's an Right. a escape issue. So Okay. you don't want to get suffocated in one spot by your own little, creation. Do you try to do like different versions of it on your own as your homework? Is that No, what no, you're no, no, no. It's you don't do these things as homework, right? You have a basic blueprint in mind that can have several pathways created in that moment. You don't prepare it, because the moment I do it, then it's done, right? Then there's no magic. Okay. But the fun part is when the director brings in a new door, and says, "Here," then trashing all of that you've done is the fun part. That's what I look forward to. So actually, if I map out 17 exits, I'm only doing it so that I'm able to can all of them. Because then when I'm doing the 18th one, I know that 17 others have not been explored. Have Nice. already been explored. Right. So, does that make sense? No. It makes sense. बहुत अच्छा जवाब था. Thank you so very much. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बात की, सवालों के जवाब दिए. And all the very best for Virus 2062 Thanks, Arun. Season Thank 2 you. once again. Arun Singh signing off for NDTV.